Welcome to session 4. Today we are going to cover data type formula field, how to create a formula field and why it is required. In the last session we covered what is object, what different fields we have. हमने create किया था, I think we created text, email, date, phone, pick list. It's time to create formula field. So let me go to my object manager, need to search for student. So here is my object and then fields and relationship. At the same time, let me open a tab, click on this 9 dots and search for tab students. So approach one is, what I can do is, ये सुमित का जो रिकॉर्ड दिख रहा है इसकी एज पता करनी है. I can create one field, उसका डेटा टाइप रख सकता हूँ मैं नंबर. But the problem is, suppose right now my age is suppose 20 years old. And after 5 years, if I am going to open this record, मैंने यहाँ पे suppose 2000 कर दिया है. So right now age is 25. After 5 years, if I am going to open this record, अगर मैंने नंबर नाम की फील्ड मैंने बनाई तो एट दैट टाइम ऑल्सो एज क्या शो करेगी 25. बट द फैक्ट इज कि मेरी एज तब 30 हो गई रहेगी. सो दिस मीन्स वी कैन नॉट आस्क यूजर टू एंटर एज. सिंस वी हैव अ डेट ऑफ बर्थ, वी नीड टू कैलकुलेट. सिंपल सा फॉर्मूला है, आज का डे माइनस डेट ऑफ बर्थ विल गेट आवर एज. सो क्या कर रहे हैं, वी नीड टू गो टू न्यू, क्लिक ऑन न्यू, scroll down, we have formula field, formula, a read only field that derives its value from formula expression you define. The formula field is updated when any of the source field changes. Of course date of birth change होगी तो अपना age भी change होना चाहिए. तो formula selected, okay, then next. यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एज एज फील्ड नेम. एंड देन दिस एज इज अ नंबर, राइट? तो नंबर में सिलेक्ट कर रहा हूँ. डेसिमल प्लेसेस आई एम नॉट लुकिंग फॉर, सो दैट्स वाई 0, राइट? मैं नहीं बोलता हूँ ना मैं 20.2 ईयर्स का हूँ, तो दैट्स वाई डेसिमल प्लेसेस आर नॉट रिक्वायर्ड, सो मैंने 0 किया. नेक्स्ट, here we are in simple formula. In simple formula we will not able to select functions, so that's why I'm going to click on advanced formula. राइट साइड में फंक्शंस दिख रहे हैं एंड मैं फंक्शन यूज करूंगा टुडे. टुडे returns the current date. Select inserted function, ठीक है, today. Here we have subtract, insert field, and my field name is, in student we have date of birth. तो यही मुझे करना था, today minus date of birth. I can check my syntax whether it is correct or not. Check syntax. This is going to return number, बोल रहा है no syntax error. नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं, विजिबल, नेक्स्ट एंड सेव. मैं रिफ्रेश करने के लिए सिंपल तरीका है मेरे पास, डिस्प्ले डेंसिटी चेंज कर देता हूं मैं. हम डिटेल में बताएंगे ये सब क्या है, डिस्प्ले डेंसिटी एंड ऑल, रिफ्रेश क्यों कर रहे हैं. बट हियर यू कैन सी एज दिख रही है 9131. एक्चुअली दिस एज इज इन days, number of days. If you want to convert this into years, we need to divide this by 365. तो मैं सिंपल सा जो रूल है बोडोमॉस ब्रैकेट्स में डालता हूँ और इसको 365 से डिवाइड करता हूँ. ठीक है, डेज में निकल जाएगा एज, उसको डिवाइड बाय 365. सेव. नाउ लेट मी रिफ्रेश दिस. नॉर्मल रिफ्रेश से भी काम चल जाएगा मेरा अभी. 25 years. So suppose if I am going to change this, मैं suppose 1990 कर दिया and save, you can see age क्या होगी 35. So depending on the source field, age की value change हो रही है. If I am going to click on edit, can I change the age? नहीं, because this is formula field. Formula field we cannot edit. डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं क्या? नहीं. सोर्स फील्ड में चेंज करो, यहाँ चेंज हो जाएगा. इन फैक्ट इफ आई एम गोइंग
है ना, मैं वापस टैब में जा रहा हूँ, मेरे टैब, चलो यहाँ पे सर्विस में क्लिक करता हूँ, मेरे टैब है राइट ऑफ स्टूडेंट. If I am going to click on this new, you will not able to see formula field, because when I'm going to click on this record, run time value calculate होती है based on this run time value calculate. कहीं store है क्या value? नहीं, formula is there, based on formula run time value derive होगी, show होगी फिर अपने को. edit का option भी नहीं है, these are read only fields, right? So thank you so much for your time. In the next session, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल्सफोर्स में, रिलेशनशिप इन सेल्सफोर्स. यहाँ लुकअप और मास्टर डिटेल, ये दो टाइप की रिलेशनशिप, इवन मेन्यू टू मेनी, सेल्फ हायरार्की, ऐसे डिफरेंट टाइप्स भी है, बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन लुकअप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप. So thank you so much. For more details, if you want more updates on our channel, do subscribe our channel. Thank you so much. Bye bye.